Now we are starting your last chapter, cross-cultural communication. What do you mean by cross-cultural communication? Cross-cultural, people from different cultural backgrounds, people from different race, different community, different backgrounds. Okay? Be open-minded. Naturally, people from different cultures are almost open-minded. They are not closed-minded. People from the same community, same track of field, या same background are always in the similar note. अगर कोई उन्हें विच different culture दा होवे, he or she is always looked down upon. पहली चीज़ है, जिधर personal experience है. दूसरी चीज़ है, that person is different from all others. ओदी open-mindedness होती है, that person doesn't belong to that group. First and foremost, you need to check your own attitude towards different culture. What is your attitude towards different culture? People from different cultural backgrounds, उन्हां दे नाल तुहाडा attitude, तुहाडा रवैया किहो जिहा है. You have to get to know your employee, their background, origin, to find out bit about them, about the business, how they communicate in the part of the world. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल समबडी इज वर्किंग हियर फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ पता करो, ਉਹਦੀ जानकारी लो. ਉਹ ਜਦੋਂ दूसरे पर्सनस ਦੇ ਨਾਲ इंटरैक्ट करता है, how that person behaves, how that person communicates, it will be different from you all, from the rest of the same culture. For instance, I'll finish this soon can mean a lot of things in different countries. And if you don't seem to understand each other when it comes to certain phrases or ideas, don't automatically blame it on the person's laziness or irresponsibility. There are certain phrases used. For example, मैं तुहानू बार बार एक phrase दस दी, there are skeleton in everyone's cupboards. पहला भी दसिया जी ना. So different types of phrase. I'll finish it soon. ये भी एक phrase है. People take it differently. ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ same ethnical group ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, literally words ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. That person must be meaning something else. In other words, don't be too rigid from the very beginning. If this different interpretation of expression or concept doesn't slow you down, not violates any rules by being tolerant about it. On the other hand, if it does not go against certain procedure or disrupts the atmosphere, then you have to open about it. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ whenever somebody is saying something, whenever somebody is quoting something, what does it actually mean? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ and what it actually means. Show that you are patient and understanding, but there's a line that shouldn't be crossed. There is a line that shouldn't be crossed. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ you have to be patient, you have to be understanding. You should be knowing ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, but never cross your limit. Of course, you'll have to understand these different cultures in order to pinpoint the problem and solve it together with employee in question. Suppose you are working with somebody from different cultures. If you have to ask that person something, you have to understand that mindset कि this person doesn't belong to our group. Naturally, upbringing ਦਾ बहुत फर्क पैंदा है. ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਬੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਇਫ ਅ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ, ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਔਡ ਲੱਗੇਗਾ. ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਡੂ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਪਰਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਡ ਲੱਗੇਗਾ. ਮੈਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ. ਸੋ ਐਨਵਾਈ, also don't go over the top when showing everybody how open and tolerant you are. Yes, of course, उस person को भी चीज़ रखना चाहिए, हर एक दिन आल open ना हो. People misunderstand. People take that person for granted. होया है, ये तो लगता है chapter ही में तो बने. In other words, it is very nice if you decided to learn some further words of your employee's language, but being too obvious about shouting phrases in the language across the room all the time may be a bit of impress. Suppose that person keeps on repeating things, बार बार phrases बोले अलग अलग, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ. ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ. Sure, they might even like it, but if you have to be careful and check if they are happy about it or just uncomfortable. Don't make a show out of it if feel awkward when you do it. Person of different cultures, like for example 5 Punjabis, 2 Hindi speaking and 1 Britisher, they are all different.
सो सब तो ज़्यादा ऑड वन आउट कौन होंदा है? बोलो 5 पंजाबीज, 2 हिंदी स्पीकिंग एंड 1 ब्रिटिशर। ऑड कौन है? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। awkward, embarrassment हो जाती है कई बार, awkward situation, person feels out of place, ठीक है। efficient communicative system, if you expect your employees to overcome cultural barriers in communication, first you'll have to set them with a reliable communication system। अगर तुसी चाहते हो जो तुहाडे employees ने उन्हां दी communication ठीक हो, ठीक है, उन्हां दा setup ठीक होवे, उन्हां दे लिए atmosphere भी उहो जिहा बनाना चाहिए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। Without this, even the team members who come from similar backgrounds will have trouble understanding each other। ਅਗਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। Just for example, I am working with you. Naturally, I am different from everybody else. ठीक है? If I create trouble, तो अगर you people on the similar, you and Rohini, तुसी almost एक similar culture दे हो, तो हमारे लिए भी आपस में भी problem create हो जाएगी। If I create trouble for you, इत्थे तो होएगी trouble, आपस में भी हो जाएगी। First of all, you need a single centralized communication hub. What is a hub? This पूरी building में उसे कहेंगे this is total hub of different things. LPU, IELTS, computer hub. पूरा एक building है जिसमें अलग-अलग चीज़ां हैं, ठीक है? So same way आप कह रहे हैं कि first of all a single centralized communication hub. एक तुम्हारा whenever you are communicating एक ਤੁਹਾਡੀ ਹਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਫॉर एग्जांपल ਇਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ 5 ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਿਕਸ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੀ ਚਲੇਗਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। A modern user utilizes a number of different messaging app and social network to convey information that can create a lot of confusion, especially given that people from different cultures prefer different channels for this purpose. For example, users in the US or India usually choose WhatsApp, ठीक है ना, कितना कुछ असी यूज़ करते हैं WhatsApp। I prefer WhatsApp, I don't use any other platform of social media, WhatsApp and Facebook। इंस्टाग्राम मेरे विच वो हैगी डाउनलोडेड हैगी, बट आई डोंट यूज इट, आई डोंट लाइक इट। स्नैपचैट भी ये हैगी है, बट इट्स अ यूजलेस थिंग, आई डोंट यूज इट। यूजफुल थिंग इज ओनली फेसबुक एंड व्हाट्सएप, क्योंकि मेरा बिजनेस वो नाल चलता है। स्नैपचैट नाल मेरा कोई बिजनेस नहीं चलेगा। इंस्टाग्राम इज अ यूजलेस ऐप अकॉर्डिंग टू मी, मेरे वालों, आई डोंट यूज इट। लोग की अपना कुछ ना कुछ पाते, कभी होया मैं देख लिया, बट आई डोंट अप्रीशिएट इट। ये जो डाउनलोडेड है ठीक है, but I always prefer Facebook and WhatsApp. Best way of communicating your business, best way of spreading the word of your business. First of all, you need a single centralized communication hub. A modern user utilizes a number of different messaging apps and social networking to convey information, and this can create a lot of confusion, especially given from people of different cultures. ठीक है, जिस तरह होने में दस्या WhatsApp वगैरह, people who already need to deal with cultural barriers in business will get over more baffled. Now people जो पहला तो ये एक business transactions कर रहे हैं, ठीक है, business interactions कर रहे हैं, वो और ज़्यादा baffle हो सकते हैं अगर उन्होंने communication proper ना हो। baffle मतलब confuse हो जाना। For example, ऐप 4-5 जने ने, आप WhatsApp ग्रुप भी बनाता कि तुसी ਉਹਦੇ 'ਚ communicate करना है, वो हिंदी 'ਚ कर रहा है, इनू पंजाबी अगर नहीं आती, शी इज़ डूइंग इन पंजाबी, शी इज़ डूइंग इन मराठी, शी इज़ डूइंग इन तमिल, शी इज़ डूइंग इन तेलुगु, शी इज़ डूइंग इन कन्नड़ा, है सारी इंडियन लैंग्वेजेस, बट ऑल आर डिफरेंट एंड नोबडी अंडरस्टैंड्स ईच अदर्स लैंग्वेज। फिर की होएगा, यू विल बी बैफल्ड, क्या की होया। सो ऑलवेज चूज अ कम्युनिकेशन हब विच इज़ कॉमन फॉर ऑल ऑफ यू।
People who already need to deal with cultural barriers in business will get even more baffled if their communication gets scattered across dozen channels. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ suggest ਕੀਤਾ ਕਿ WhatsApp group ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ different channels ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ socially messages ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ. She wants to convey the message that the seminar is on 12th to 13th at 9 AM. She puts it on Instagram. मेरे वर्गे ने तो Instagram चेक ही नहीं करना, मैंने क्यों पता लगेगा. She only uses WhatsApp, उन्हें भी पता नहीं लगेगा. He uses Facebook, उन्हें भी पता लगेगा. Now he is also given the duty, वो पा दे Facebook पे, पा दे Insta पे, मैं WhatsApp पे लगी रहूँ. So we will be all baffled. So choose one communication center for which all should be interacted. Your employee can use these for their private conversation, but when it comes to work, they should be equipped with centralized system that will eliminate the noise and streamline the communication. ठीक है, when you are working, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ WhatsApp यूज़ करो, मेरे वालों Facebook यूज़ करो, या whatever Instagram, जो मर्जी, but if you are working in an environment, you should use one common platform to interact with each other. ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ so that you interact with each other according to your official work. ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, but when you are doing your official work, you should be only using one centralized hub for your communication. Bonix is a great solution to the respect of particularly for remote teams. You can use a single tool for all types of communication, texting, group, audio chat, video transfer, everything. I would prefer WhatsApp. Even for video calls, I prefer WhatsApp. I don't know बाकी कोई platform video call करता है नहीं करता. I damn care. I only use WhatsApp. Now cultural difference awareness. Next up, you'll need to raise awareness among your employees about effective and diversity in the workplace and importance of tolerance and understanding. This is truly vital, as for instance, racial and ethnic minorities make up of 30% of US workforce. US countries, Australia, 30% minorities come कर रहे हैं. People from different areas. Minority group उत्थे शायद हिंदू या सिख होन, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया कि उत्थे उस एरिया च माइनॉरिटी ग्रुप केड़ा है. इत्थे माइनॉरिटी ग्रुप कौन है? क्रिश्चियंस. मेजॉरिटी कौन है? सिख्स. इन पंजाब अकॉर्डिंग टू द रीजन माइनॉरिटी ते मेजॉरिटी हो जाते हैं. ठीक है, अगर तुसी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश देखो तो उत्थे मेजॉरिटी कौन है? हिंदूज. ठीक है, अगर तुसी साउथ एरिया चले जाओ, बैंगलोर वगैरह, उत्थे माइनॉरिटी कौन है? सिक्स. थोड़े ही नहीं. ठीक है ना. यू पीपल ओनली गो टू कैनेडा, तुसी केरला नहीं जाओगे, अगे बैंगलोर नहीं जाओगे. ओनली पीपल इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंसेज एंड ऑल वो विजिट करते रहते हैं बैंगलोर. ठीक है, बट डू नॉट सेटल डाउन. तो फ्रॉम द एरिया वाइज माइनॉरिटी इशूज है, केड़े एरिया च मेजॉरिटी के दिए ते माइनॉरिटी के दिए. You can organize different kinds of training for your workers for this purpose. If possible, try to customize them as possible based on background and need for particular people who work in your office. Whenever you are a head of a team or on a managerial level, always make sure to be very polite with others, employees who are working under you, as well as know about them. उन्हां दे बारे जानकारी हासिल करो, उन्हां दा background, ताकि वो तुहाडे नाल comfortably गल कर सकन. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਦ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ. ਇਹ ਆਪ ਉਲਝਣਾ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ. ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਮੀ, ਸੋ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ. ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਲੇ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਬਿਕਮਸ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵਿਦ ਯੂ. ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਰਹੇ. ਆਈ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ, ਤਾਕਿ ਉਹ एम्प्लॉय वर्किंग अंडर मी शुड बी वेरी कंफर्टेबल. तो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ whenever you are working with somebody, if you are on a top most position, be polite. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਸ ਹੀ ਨਾ ਦਿਖਾਓ.
people will never respect you, people will never love you. Love means respect वाला love, ठीक है? So always be on a communicative, good communicative tone with them. Never be gossiping. कभी कि हाँ विश बोल, वो कहेगी तुरदी बन. 100%. Nobody is इतने कोई किसी तक गुलाम नहीं हैगा. So we have to be very polite. ਹੁਣ सर ने मेरे नाल गल करदे ने आराम नाल गल करो भी जे नहीं ऐसे नहीं हम अच्छा जी टाटा मैनू तो IDPs ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਫਰ ਆਈ है LP ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਚੱਲੀ 100% ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ so you have to be very polite if you are on the topmost position ਜਦੋਂ topmost position ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਗਿਆ always be very polite especially to the people working under you. If you make it too general, then there is a danger it will be boring or inapplicable and it will be seem like you did it only for the sake of protocol. This usually end up in yawns and zero lessons learned. ਹੁਣ अगर मैं प्रवचन भी देना शुरू कर दूँ कि नहीं बेटा ऐसा होना चाहिए वैसा देने का हाँ ठीक है ना शील भी yawning उम्मीद आ जाएगी. So we have to make it exciting. मैं कभी हंसा भी देनी है so that it should never be एक प्रोटोकॉल ना लगे. प्रोटोकॉल साडा वर्किंग वाला हैगा तो इन्हें तो क्या करना ऐसे फिर ऐसे नहीं करेगी बेटा ये हो जाएगा कहना हाय हाय कितने आ गई ठीक है. सो यू हैव टू मेक इट एक्साइटिंग यू हैव टू मेक इट वर्क कल्चर ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ वेयर पीपल शुड बी एक्साइटेड टू वर्क. एक तो ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਮੋਨੋਟਨਸ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ when you are only working to get your salary on is the 90 second थर्ड बस इसके आसपास ही कुछ ना कुछ मिलता है ना तो वही अगर होए कि हाँ भी मैंने इन्नी तरीक में इतने पैसे आने हैं फिर नहीं कम हो गया. यू शुड बी एक्साइटेड यू शुड बी लाइक आई विल लर्न समथिंग न्यू. हुण मैं स्टूडेंट्स तो सीखदी हूँ थल्ले ਜਿਹੜੇ पेरेंट आए होंगे उन्होंने तो सीखदी हूँ नैचुरली वैन आई विजिट जिस तरह कल मैं गई सी IDP लुधियाना नैचुरली मैंने तो बहुत कुछ सीखने को मिले वही चीज़ मैं इतने लागू करने की कर रही हूँ. Whenever you go out from your zone, this is your comfort zone, your office से बैन नहीं में आई हैं मार्केटिंग भी कर ली. Whenever you go out from your comfort zone, you will learn 2000 more things and you will bring back only 50% of it. याद रखो 2000 चीज़ां देखियां सीखियां पर सिर्फ 50% याद रहेगा पर उन्होंने उसी बार बार करांगे तद ओदा 70% 80% and when you apply it in your work you will get 100% results. Therefore try to make the training as specific as possible. Talk, concentrate examples that are related to concrete employees and concentrate culture from all of them. Naturally giving examples. I give a lot of examples. अगर मैं सिर्फ बुकिश वर्ड्स पढ़ाई जाऊँ कि ये ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन है that you can do it. Always give examples even if you are students and even if you are employees. Give examples. Make it little ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਸਪਾਰਕ ਆਏ ਥੋੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆਏ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ. Tell them about real world situations and how they should ideally behave and communicate. You can even let your employees say a word or two about this that they wish to actively partake. ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਫॉर ਅਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ. ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਗਿਵ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਟੈਲ किस तरह होर हो सकता है इस तरह मार्केटिंग कर सकते. बेशक यू आर नॉट डूइंग आउटडोर मार्केटिंग मैं ही कर रही इनडोर तो सजेशन दे सकते हो ना ठीक है ना. सो यू कैन कम्युनिकेट एंड द मोर आइडियाज आई गेट स्पेशली फ्रॉम द यंगेस्ट जनरेशन. यू मस्ट बी 1920 ठीक है तो मेरे लिए तो यंगेस्ट जनरेशन है मोर मैंने पता लगा अच्छा अजकल की पीढ़ी की कह रही है. यू आर द यंगेस्ट जनरेशन 19-20 साल के बच्चे हो ठीक है ना. सो वट यू तुहाडे वालों अगर सजेशन इवन फ्रॉम स्टूडेंट्स आई वुड appreciate if you give suggestions and I want suggestions. You will have to give suggestions ठीक है. सो मैनू की होएगा कि मैनू पता लगेगा अच्छा बच्चों का यह फीडबैक है दे वांट दिस इन्हां लई कुछ इहो जिहा भी असीं प्लान आउट करिए. सैमीनार तो हो रहा है प्लान आउट समथिंग एल्स विल बी प्लानड आउट अगर तुसीं इहदे च भी पार्टिसिपेट वधिया तरीके नाल करो. आ गई समझ. Now let the new team members introduce themselves. Establish a practice of new employees introducing themselves. ये असी भी करना चाहिए सानू कि new team member जिस तरह तुसी if you are working
ਤੇ ਡਾਇਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ और गेट सब तो अगे खड़ी होवे सारा स्टाफ इच्छे पिछे खड़ा होवे एंड लेट हर इंट्रोड्यूस हरसेल्फ क्यों यस के नो हाँ ठीक है इस तरह का होवे ते दैट पर्सन विल गेन कॉन्फिडेंस हुण मैनू कहो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैं तो भज के देवां इंट्रोड्यूस कर बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट फॉर हाउ मेनी इयर्स ठीक है A great way for your team is to get to know a new person in the office to establish a practice of new employee introducing themselves, especially if they have cultural different background. ये chapter लिखा किसने? मेरे को जानते नहीं लिखा होगा. So, if a person is from a different cultural background, then it is very important to know that person. Reason, अगर तुसी सारे इक्को जगह दे हो, वो एक मिनट. So, अगर कोई different person है तो आपको वो तो कुछ नया सीखने को मिलेगा. उस पर्सन को तुहाडे तो सीखण तो बहुत कुछ मिलेगा 100%. इट इज़ लाइक दैट. द अदर पर्सन जिस तरह मैं ब्रिटिशर का एग्जाम्पल दिता ब्रिटिशर्स तो इत्थों पंजाबी हिंदी तमिल तेलुगु सब सीख के गए ने असी तो उन्होंने सिर्फ एक इंग्लिश ही पढ़ी. अदर पीपल द पर्सन फ्रॉम द अदर ग्रुप लर्नस मोर. जिस तरह मैं तुहानू दस्सिया सीगा आई हैव ट्रैवल्ड सो मैनी प्लेसेस बट आई लव पंजाब. I think this is the most beautiful place on the planet Earth, Punjab, according to me. Different cultural group, but for you, Canadian. Okay. Let them do it in informal way, explaining who they are, where they come from, and what they think it is important about their lives, their character, and their origin. Always, character doesn't mean कि तुसी उन्हें उस तरीके से देखा नहीं character के हो जाए. No. Character does not mean that. Character means the upbringing ki ho ji, what type of qualities this person has. Negative, positive सारे अच्छे होंगी है. Nobody is God. ऐसे तो हमें भी पता है ना. मैं नहीं, at least मैं तो नहीं. ठीक है ना? Nobody is God. Nobody is perfect. Nobody is संत महात्मा. हर एक च negative, positive qualities होंगी हैं. तुसी उस person की positive qualities नो फड़ो, negative नहीं छड़ो. ठीक है ना? What will happen in the end? For example, just for an example, this child meets these 15 people. इन्हां सारिਆਂ ਚ I will not pinpoint पर सारिਆਂ ਚ negative qualities होएगी. ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ bad behavior ਹੋਏਗਾ ਨਾ. ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਗॉड ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? everybody ਹੈ. ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ? 50 ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ. अगर तुसी नेगेटिव ही देखते जाओ तो तुहाडे च 50 नेगेटिव बैड थिंग्स क्वालिटी नहीं है. सो ऑलवेज ट्राई टू टेक द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट. असी की लेना ठीक बैड जो असी की लेना टेक द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट. Don't make them only talk about their work experience and how they are enthusiastic in getting an opportunity of your company. This way your team will have a chance to actually get familiar with this person and they may get an idea about how they should communicate with the new addition by the team. The best thing is that it will happen in a perfectly natural and spontaneous way. What does it mean? It means oh the interview skills सारे narrative होंदी I would like to work in your company to do that to get to be in 5 years तो हम तुसी अपने आप को कितने देख रहे हैं सारा कुछ पूछा जाता है. I've been conducting पता ही I want to see myself on the top. I will work hard as the best team leader. ये वो सब रटा है ना हैगा. ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. गेट टू नो दैट पर्सन. अगर मैं इंटरव्यू लेनी होती तो पूछना सी व्हाट आर योर हॉबीज. वो भी वैसे पूछ ही लेने व्हाट डू यू लाइक टू प्ले. मेरे वर्गे ने क्योंकि पर्सन लाइक मी विल आस्क अबाउट माई ओन इंटरेस्ट इन दैट पर्सन. डू यू लाइक टू प्ले. मेरी गेम पसंद है. डू यू लाइक बास्केटबॉल. अरे फिर तो चल मेरे साथ. ठीक है ना. ठीक है ना. सो ऑलवेज आस्क दैट पर्सन. कम तो उन्हें करना ही है थोड़ी कंपनी से. दैट पर्सन इज ऑलरेडी क्वालिफाइड टू डू दैट वर्क. बस थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है. ठीक है ना. नैचुरली अगर बीटेक या बीबीए बीसीए हैगे हो तो उसके बाद जॉब नहीं जा रहे हो यू आर ऑलरेडी क्वालिफाइड. सो वही व्हाट इज योर नेम व्हाट वो सब सीवी ते लिखा है. आई नेवर आस्क दैट. ऑलवेज आस्क डू यू लाइक दिस डू यू लाइक दैट व्हाट अबाउट योर सैटरडे प्लान्स. आई ऑलवेज आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. जो आइल्स ट्रेनर है वो भी कंफ्यूज सी. सो दिस मेक्स द पर्सन कंफर्टेबल. मैं कहता हूँ सैटरडे पार्टी के ना लेके चले अब तक नहीं लेके गई. ठीक है ना. बट इट इज़ दैट अ पर्सन बिकम्स कंफर्टेबल विद यू. कल ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ वर्क रिलेटेड ही गल होनी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दैट पर्सन विल बी कंफर्टेबल कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ईगो नहीं है.
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਓ। That's the thing. That is the main thing. What a manager can teach you, how to conduct interviews. Okay. However, don't force that this new person feels too uncomfortable about it. Give them time to relax and show who they are, and trust your team. They'll be understanding enough, and do not do anything that is out of line until then. पर फोर्स ही ना करो कि नहीं नहीं सबके सामने बोलो, बेचारा अनकंफर्टेबल हो गई, इन्ना भी किसी के पीछे ना पो। मेक दैट पर्सन फर्स्ट कंफर्टेबल। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਓਪਨ ਆਊਟ ਹੋਏ ਦੈਨ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਮਾਈਕ ਪੜ੍ਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪਰਸਨ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸ਼ਾਈ, some people do not like to converse, open up easily, some people are laughable, so some people can do ha 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 all the time. So ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। Establish clear rules but don't rely exclusively on them. This is very important. Rules ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ 8 to 5, ਪਰ ਕਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 7 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ 8 ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈਗਾ 7 ਤੋਂ 5, ਬਟ ਕਦੀ ਵੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਦੀ ਮੈਂ 6 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। It is according to flexibility, how you guys do that work, how much more flexible you are in your work. ठीक है, the entire point of getting people to overcome cultural barrier is not to do by imposing rules and restrictions. Your task is not to police around people looking for perpetrators, but rather to create environment where they feel safe. आपका किसी को perpetrator नहीं बनाना। perpetrator is ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਉਗੇਸ਼ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਨॉट दैट। ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ EMPLOYER ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ EMPLOYEE ਉਹ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਲੱਗੇ। They should be respecting and listening to each other because of a bunch of regulations you wrote down, but because they understand differences and fully accept each other in spite of them. Not because I have given them a bunch की होता है वैसे bunch of roses बोलते हैं गुच्छा, तो उसी तरह bunch of responsibilities। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਥੋਪ ਕੇ ਚਲੇ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। If you are a senior in your company and if you are on a manager level, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਡਰ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਮਿਸਟੇਕਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰੇਗੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣ, ਹਾਂ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਓਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਇੰਨੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਨੋ ਨੋ, ਬੀ ਕਰਟੀਅਸ, ਬੀ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਪੋਰਟਿਵ, बी ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਕਰੋ, ਬਟ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲਿਸਨਰ ਬਣੋ। ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਦੀ ਚਲਾਓ। ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਦ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਨ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ EMPLOYEE ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇਜਰਲ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ। नेक्स्ट इज टीम बिल्डिंग। ये आप हल करांगे टीम बिल्डिंग।